Hello and welcome. Woody Allen said, "My films are therapy for my debilitating depression. In institutions, people weave baskets. I make films." I'm Atika Farooqui and welcome to Now Showing. Each week on this show, we showcase cinema like never before and we help you choose what to watch and what to skip at the movies. We have lined up a packed show for you this week, so sit tight because coming up are the headlines. Amitabh Bachchan shines in Jhund, a late sports drama which highlights wonderful performances by slum dwellers. Sanya Malhotra and Vikrant Massey in Love Hostel. Should love be punished in 2022? Paresh Rawal talks about returning to Gujrati cinema with Dear Father and reveals how he hits the bullseye with all his performances. And Jhund and Sairat director Nagraj Manjule talks about why it's important for him to highlight social evils in his films. Let's talk about Jhund. Jhund is an underdog sports movie that doubles up to be a story of rousing ambition in the impoverished hearts of the children of slum dwellers. The powerful and emotionally evocative 3-hour-long film topples the unconventional commercial genre of a sports drama and adds underlying documentary-style reality to the narrative in a film that may seem long but will leave you with a lump in your throat more often than not. A physical wall that divides the haves and the have-nots and stands between a college and the slums of Nagpur. And there is a playground on a sprawling college campus adjoining their slum. For the poor kids of the slum, it's a daily fight to keep to themselves a little piece of land that's used by them to play a sport. Written and directed by Nagraj Manjule, Jhund is a story of the walls, both physical and metaphorical. Amitabh Bachchan is cast as Professor Vijay Borde, a social activist modelled on the life of Vijay Barse, a retired sports teacher who 2 decades ago founded Slum Soccer, a Nagpur-based NGO that works to give slum children a new life by grooming them as footballers. Jhund fictionalizes an actual experiment that caught everyone by surprise and produced flashing results almost immediately. The film's plot also incorporates the Homeless World Cup, which incidentally began in 2001, the year slum soccer came into being. Nagraj Popatrao Manjule manages to hold one's attention for most part of the film. However, the pace slackens in the second half and it could do with a much tighter edit. It's a beautiful story married to a sports drama. The genre is a mix of human triumph as well as sports. There is societal bias, caste divide, societal judgments, class difference, economic difference, and women's education and rights are interspersed into the screenplay. Words are not enough to describe how wonderfully Amitabh Bachchan aces the roles he chooses to play. This time, he is a retired sports professor who keeps the benefit of his slum neighbors above and over his own child, invests himself and his hard-earned money to protect and nurture kids from the slums of Nagpur. Also, the real heroes are the kids like Ankush, that is Dawn, Babu, that's Priyanshu, Kshatriya, Rishabh, many more. We were told that they are not professional actors, yet I tell you they were outstanding. We also see Rinku Rajguru and Akash Thosar, who were last seen in Nagraj's super hit film Sairat. To sum up, this one's a dramatic sports film which may not have thrilling moments around every corner, but the point it tries to drive home will definitely keep you numb for many days. Last week, dropped on the OTT platform ZEE5 was Vikrant Massey and Sanya Malhotra starrer Love Hostel, which tells the story of newly married interfaith couple who were hunted by an assassin played by Bobby Deol. Can love be punished in 2022? And can we still sit back while couples are hounded for simply choosing their life partners on their own? For more, over to the two leads, Sanya and Vikrant, in conversation with me.
एक जोड़ा है जो बेसिकली शादी कर लेता है अपने घर वालों की मर्जी के बगैर। हर किरदार इन दोनों को छोड़ के इतना गुस्से में नजर आ रहा है, इतना दिख रहा है उसके अंदर। लड़की को उसका छोटा भाई पीट रहा है, मतलब ये क्या दुनिया है। एक्टर होने का यही फायदा है कि आप हर किस्म का रोल, हर हाँ। किस्म का किरदार कर सकते हो। और जब मैंने ये पढ़ी ना, मैं स्क्रिप्ट नीचे रख ही नहीं पा रही थी। तो मेरे दिमाग में ये भी था कि मुझे कुछ अलग करना है, कि वो कोई अलग दुनिया मुझे एक्सपीरियंस करनी है एज एन एक्टर, एंड आई एम ग्लैड कि मुझे लव हॉस्टल के थ्रू वो करने का मौका मिला। शंकर रमन इसके डायरेक्टर हैं। फ्रोजन, बहुत सारी 20-21 फिल्मों के सिनेमाटोग्राफर रहे हैं, नेशनल अवार्ड विनिंग सिनेमाटोग्राफर रहे हैं, और डायरेक्ट की उन्होंने 3-4 फिल्में डायरेक्ट की हैं, गुड़गांव में से एक है। एक अमेजिंग सेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक्स है। ये मुझे लगा एक शॉट जाया नहीं, हर शॉट का एक माने है। जैसे कि ऐसा लगा कि कोई हॉलीवुड का डायरेक्टर है और दिल्ली मुजफ्फरनगर में आके उसने सेट किया है। इट्स द स्क्रीन प्ले एंड द राइटिंग इज सो गुड कि every shot is followed by another shot which has a meaning. अगर आप फिल्म देखेंगी तो शंकर सर एक तो पहले कि वो बहुत अनुभवी इंसान है। हमारी फिल्म में जो बैकड्रॉप है, जिसके बारे में आपने इतनी खूबसूरती से बताया, वो एहसास हम लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। हालांकि मीडियम टू मीडियम आपका तरीका, आपका अप्रोच बदलता है, बट वन थिंग वाज वेरी श्योर दैट शंकर सर वांटेड पीपल टू फील क्लॉस्ट्रोफोबिक व्हाइल वाचिंग दिस। जो उनके दोनों किरदार महसूस कर रहे हैं, जो एक ओवरबेयरिंग कैरेक्टर्स हैं हमारी फिल्म में, चाहे फिर वो लव हॉस्टल के गार्डियन हो, चाहे वो डागर का किरदार हो जो बॉबी सर ने प्ले किया है, या जो वो कन्फाइंड स्पेस हम दोनों को मिली है पर्दे के पीछे, तो बहुत ही क्रैम्पनेस जो है उसका अनुभव ऑडियंस तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। एंड इट इज अननर्विंग, इट इज अनसेटलिंग, वेरी अननर्विंग, एंड all credit goes to the entire team, like beginning with Shankar sir, followed by Vivek sir and the entire team that's worked on it. Unusual space है। आम तौर पे हम सब ये जानते हैं कि जिंदगी में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, लेकिन ये एक ऐसी स्पेस है जहाँ पे लोग ना चाहकर भी या चाहकर भी कभी कोई जाना नहीं चाहता ऐसी दुनिया में, या अनुभव ऐसा नहीं चाहता। But we decided to tell the story, and we had to be true to the story. We had to be true to the experiences that Jyoti was feeling and Ashu was feeling. तो इसका पूरा श्रेय शंकर सर को जाता है कि जो भी ये दो प्राइमरी कैरेक्टर्स फील कर रहे हैं उस फिल्म में, वो आप फील करें जिस हद, मतलब at the most that you can। ये मूवी है, ये ऑनर किलिंग, तो ऑनर किलिंग के यूनिवर्स से आती है, जिसमें एक लड़का लड़की अपनी मर्जी से शादी कर लेते हैं। तो कितना गुस्सा होते हैं सब लोग कि ऐसी लड़की कहाँ से आ गई हमारे गांव में कि जिसने अपनी जिंदगी का फैसला लेने का फैसला किया। तो हम यही बात कर रहे थे कि क्या ये दिल्ली, मतलब क्या ये नॉर्थ, क्योंकि आपकी फिल्म में लिखा हुआ आता है कि एक नॉर्थ इंडियन फिल्म इज बेस्ड देयर, like every film is set in a certain backdrop, this film is set in that backdrop। तो ये ऑनर किलिंग के बैकड्रॉप पे ये फिल्म है। Violence, atrocity, suppression is universal। हम तुम एक लव हॉस्टल में बंद हो और चाबी खो जाए फिर देखते हैं क्या होगा। डागर ना है, डागर ना है, डागर ना। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वाचिंग डागर। बाप रे, कितना बॉबी देओल बरसात के क्रश थे हमारे, बताओ जरा, चॉकलेट बॉय से ये बताओ डागर, इनक्रेडिबल कितना डेंजरस शक्ल लग रही है उनकी। एंड ही वर्कड सो हार्ड, मतलब उनको सेट पे इतने, आप समझ लीजिए 25 साल से काम कर रहे हैं वो लगभग, और इतने साल काम करने के बाद, इतना अनुभव, इतनी तरक्की और इतना प्यार हासिल करने के बाद भी वो रोज सेट पे आते हैं एज ए न्यू कमर। वो हमें कहते हैं कि यार मैं बड़ा नर्वस हो रहा हूँ, मैं क्या करूँ। वाओ, एंड दैट इज सो इंस्पायरिंग, very inspiring। Now we have the very talented Paresh Rawal, who's returning to Gujarati cinema after 40 years with Dear Father, a film that he is not just acting in but also produced by him. This powerhouse talent spoke to my colleague Vishal Chatkara about that one role he is most excited about right now and how he gives a perfect performance with each of the characters that he plays. Babu Rao has had quite a long journey. You know, the film Dear Father, of course, is adapted from a Marathi play. It also talks about alienation in the minds of senior citizens today living in the nuclear families. What was about this topic that you decided to make a return to Gujarati cinema with this film? See, because there are certain things at you feel at certain age.
मेरे भी बच्चे बड़े हो रहे हैं, मैं भी बूढ़ा हो रहा हूँ. बूढ़ा माने आई एम ऑल्सो ग्रोइंग ओल्ड. इन 2006 or 2007 I was looking for a play which deals with the father and son relationship. So I was working on the script which is based on Academy Award winning film, The Barbarian Invasion. Okay. It's a Canadian film. Yeah. We wanted to adapt into a play. We tried our best, but we were not. होता था, लेकिन we were fearing कि भाई इसमें justice नहीं दे पाएंगे. ये play was suggested by मोहन आगाशे. Okay. आप बोलते परेश तू ये प्ले कर और तू करेगा तो बहुत मजा आएगा. Definitely. सो मैंने बोला ठीक है मैं करता हूँ. बट जब आया मुझे लगा मुझे ढालना पड़ेगा हमारे गुजराती एथोस के हिसाब से, वो सब करना पड़ेगा. एंड सिंस इट इज अ डबल रोल, व्हाई नॉट ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एंड डू डबल रोल ऑन स्टेज. आई नेवर डन डबल रोल ऑन स्टेज. ओह या तो वहां से ये शुरुआत हुई. बट दिस सब्जेक्ट मैटर वेरी क्लोज टू माई हार्ट. और जो ऐसा मैंने बताया मुझे बाप बेटे के जो था उसका करना था. और लोनलीनेस के ऊपर हमारे वहां कुछ ज्यादा हुआ नहीं है. लोनलीनेस के अंदर जो क्वर्कीनेस आती है, इडियोसिंक्रेसीज आती है, जो इनसिक्योरिटीज आती है, जो फियर आता है, जो सिनिसिज्म आ जाता है, एंड यू आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट डेथ डेथ डेथ, यू आर जस्ट अबाउट टू डेथ. दैट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर इज वेरी अपीलिंग. अरे सर, there's a dialogue in दिल चाहता है where Amir's character से perfection को improve करना मुश्किल होता है. I think the same can be said about all the characters that you played. They are really flawless, irrespective of the film's fate. You are always lauded for your performance, be it as Sardar Vallabhbhai Patel or even films like Sir or Wo Chokri. What is the trick of hitting the bullseye, sir, each time? I think theatre training over the years has helped me a lot. Plus, my writer and my director, उनके help के बगैर कुछ हो नहीं सकता. And at times, your co-artist. और जितना थिएटर में जो जितना मेहनत करते हैं, रीडिंग द स्क्रिप्ट, री रीडिंग द स्क्रिप्ट, रिहर्सल्स एक्सेट्रा, वो सब करते हैं. तो सिर्फ आई मीन मैं थोड़ा ब्रॉडली कहूंगा कि ऑन स्टेज भी वी आर प्रिपेयर्ड फॉर 1500 मीटर रेस. और फिल्म के अंदर बड़ी मुश्किल से 100 मीटर दौड़ने को मिलता है. आपकी उतनी डिमांड नहीं होती हमारी हिंदी पिक्चर में. You know, in the recently released Rahul Raval's memoir titled Raj Kapoor Master at Work, Rahul Raval, who directed you in Arjun, and that was also his debut Hindi film, he said Arjun needed unique faces and good performers. It was in the process we discovered the extremely talented and versatile Paresh Rawal. Do you have memories of making Arjun? Oh yes, of course. Vivid memory है, अभी भी उतनी fresh है. तो मुझे बहुत मजा आया था. एंड आई वाज स्लाइट ऑफ ऐसे मैं कुछ डरने वाला हूं नहीं, लेकिन होता नहीं, पहली बार जा रहे हैं सेट के ऊपर. और मेरे दोस्त की फिल्म थी, करीम मुरानी इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, ही हैड गिवन मी द, बोला था कि राहुल भाई से मिल लेना. एंड अगेन इट इज रिटन बाय जावेद अख्तर जी. Okay. तो एक होता है कि बड़े बड़े नाम के साथ आप काम कर रहे हैं, लेकिन जब पहला शॉट मैंने दिया तो राहुल भाई आए, बोलते यू आर अ वेरी गुड एक्टर और हमारी हर फिल्म में आप होंगे. बोले यार चलो ये तो अच्छा हो गया. उस रात मैंने दबा के दारू पी थी. तो ये मेमोरी है. Yeah, the set कहाँ था? राजकमल, लोअर परेल. Yeah, there was a there was a And it was so very nice and kind of Mr. Rahul Raval कि जब मेरा नाम आया तो बोले इंट्रोड्यूसिंग परेश रावल एज अनूप लाल. तो मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने सर ये क्यों? बोलते परेश इसके लिए बिकॉज देयर इज अ सिमिलरिटी. और तेरे बाल छोटे हैं, सदाशिव अमरापुरकर के भी बाल छोटे हैं, उनके भी पिक्चर अर्धसत्य रिलीज हुई थी. तो लोगों को गलत फहमी थी कि सदाशिव इसमें काम कर रहा है. दैट इज व्हाई ये मैंने नाम दिया कि इंट्रोड्यूसिंग परेश रावल एज अनूप. एक कार्ड दिया था उन्होंने. सी दैट वाज वेरी नाइस ऑफ हिम, वेरी स्वीट ऑफ हिम. You know, you also will be seen playing Tarini Khoro, the fictional character created by Satyajit Ray in director Anand Madhavan's short film titled The Storyteller. There's a lot of buzz around this film. What can we expect from it, sir? Yeah, first of all तो रे साहब की कहानी है. तो कहते हैं कि बड़ा नसीब वाला हूँ कि रे साहब के साथ तो काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन रे साहब की कहानी में काम करने का मौका मिल रहा है. तो एंड आई एम रियली एक्साइटेड कि इस किस्म के मास्टर की कहानी में काम करना. विल आई बी एबल टू डू जस्टिस? और बंगाली किरदार है जो मैंने पहले किया नहीं है कभी. ऑफ कोर्स आई डोंट हैव टू स्पीक बंगाली इन दैट, बट फिर भी it becomes quite tough. So I'm really looking forward to it, and I'll try my best, very, very best.
Time for a short break on Now Showing. When we come back, we have director of this week's Jhund talking about how he impressed Amir Khan with his work. Don't go away. We'll be back in a few minutes. Welcome back to Now Showing. I'm Atika Farooqui. Now, National Award-winning director Nagraj Manjule, who's also the force behind this week's Jhund, reveals why Amir Khan calls him a disruptor. Nagraj, who himself has been an actor, and talks about how the understanding of acting as a talent helps him in directing actors, and why it's important for him to keep highlighting societal evils, social evils in his stories in this interview with my colleague Vishal Chatkara. Nagraj, आपकी latest directorial venture, Jhund, starring Amitabh Bachchan, is all set to release in cinemas on March 4th, that is this Friday. अगर मैं आपसे पूछूं, did you feel any pressure, or of course there's a responsibility on you because there will be comparisons with Sairat? हाँ, मतलब ये मैं इस बात का प्रेशर नहीं लेता हूँ सर, क्योंकि मेरे को सैराट बनाने से पहले, मतलब जब सैराट बनाई थी तभी भी पूछा कि तूने फैंड्री जैसी फिल्म बनाई है मराठी, अभी तू ये कर रहा है तो क्या प्रेशर है। देखो, काम मन लगा के करो, यही जरूरी है। और मुझसे, मैं हर बार कहता हूँ, दर्शकों से हाथ जोड़ के कहता हूँ या सबसे, कि मुझसे वही अपेक्षा मत करो, मुझसे सक्सेस की अपेक्षा मत करो, एक अच्छी फिल्म की अपेक्षा करो, और वो आप डिसाइड करो, आप सोचो कि इसने क्या काम किया है। तो वो मैं पहले से प्रेशर लूंगा तो उससे कुछ होता नहीं। तो मुझे प्रेशर लेना है तो मैंने काम करने टाइम पे लेना चाहिए, और लोगों को क्या लगेगा वो मैं नहीं सोच सकता। लोगों को जो लगेगा वो लगेगा, और जनता जनार्दन जिसे कहते हैं वो इतनी बड़ी है और इतना डाइवर्स उनकी राय रहती है। किसी को शायद अच्छी ना लगे, किसी को अच्छी लगे, किसी को बहुत अच्छी लगे, तो उस पर मेरा कंट्रोल नहीं है। मैं अगर कोई कहे तो बस ये तारीफ किसी से सुनूं कि मेहनत से फिल्म की है, तो बस इतना मेरे लिए काफी है। और मैं तो ऐसे ही खुश हूँ कि मैंने बच्चन सर के साथ फिल्म बना ली, लेकिन थोड़ा कॉन्फिडेंस भी है कि ये फिल्म लोगों को अच्छी लगेगी। अभी भी जितने भी स्क्रीनिंग्स हुए तो लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिए, ताली बजा रहे हैं। कल आमिर सर ने फिल्म देखी, आमिर खान जी ने, और पर्सनल स्क्रीनिंग था, उसमें भी सब लोग उठ के स्टैंडिंग ओवेशन दिए। और आमिर सर ने ये बात कही जो मुझे बहुत अच्छी लगती कि हमारे सिनेमा के जो भी लॉज हैं तो सारे उसको तोड़ देता है, लेकिन फिर भी हमको वो उठने नहीं देता, फिल्म देखने के लिए मजबूर करता है। और हमने जो भी 30 साल में सीखा है उसका तूने फुटबॉल बना दिया। तो ये कॉम्प्लीमेंट मेरे को मतलब बहुत satisfied हुआ मैं। You're yourself an actor. How does understanding of acting helps a director, and how does the actor inside you guide you sometimes when you are directing a big emotional scene? मैं जब सैराट ये बच्चों के साथ कर रहा था तो उसमें एक बाया का सीन है, लंगड़ा जो है ना, आपने अगर देखा होगा तो, कि वो रोता है और रोते रोते फिर हंसने लगता है। तो वो मैं खुद मतलब लिखते टाइम से मैं करता था। मैं जब लिख रहा था तो मैं सोच रहा था कि कैसे करेगा, ये क्या इमोशन होगा। और जैसे कहा, मैं एक्टर भी हूँ, डायरेक्टर भी हूँ, और मैं राइटर भी खुद ही हूँ। तो मुझे लिखते टाइम ही मैं एक महसूस होता है कि क्या होना चाहिए, तो वो हेल्प करता है आपको एक दिशा पता चलती है। लेकिन कभी कभी आप बच्चन सर जैसे अगर एक्टर हो तो वो कुछ आपके सोच के परे भी जाकर आपको कुछ दिखा देती है कि ये भी रंग है शायद इसका। मतलब छोटा सा सीन था, एक बहुत ही छोटा है, लेकिन वो सर ने 2-3 तरीके से मेरे को बताया कि ऐसे हो सकता है। और मैं बहुत उस टाइम में शायद ये सोच नहीं पाता था कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। दो सेंटेंस वाला सीन था, तो मैं वो भी सीखा। तो हमारे अंदर का एक्टर, राइटर, डायरेक्टर भी मदद करता है, लेकिन आप दूसरों को देख के समझ के भी सीखते हो। You know, both your previous film Fandry and Sairat also depicted the caste politics of that region. आपने पास में बोला है कि the caste story is not over yet. Is that your way to bring change in the society by reflecting social evils in your movies? देखिए, मैं जिस अनुभव से आया हूँ, जिस एक्सपीरियंस से, मैं क्या कहें, मेरी पूरी सोच या मैं जैसे पला बड़ा, जो माहौल मैंने देखा, जो दुख दर्द, जो समस्याएं मैंने फेस की, तो उससे एक कैरेक्टर अपना बनता है। मतलब हर एक आप, मैं, हम अपनी जो परवरिश है उससे ही हम शायद अपना कैरेक्टर तैयार होता है। तो मैंने ये देखा और मुझे बुरा लगता है, जैसे आपने कहा कि कास्ट अभी भी है, ऐसी चीजें अभी भी हैं। सिर्फ कास्ट नहीं है, जेंडर है, धर्म की बातें हैं, और जो इंसान को इंसान से तोड़ती है, सारी बातों का मुझे मतलब बुरा लगता है। और मैं धीरे धीरे सीखा, समझा, जब दुनिया देखी, पढ़ने लगा, तो मेरे को बात ये समझ में आई
कि ये नहीं होना चाहिए, ये बात आगे बढ़नी चाहिए। और मैं कहानियां कहना चाहता हूँ, एंटरटेन करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ बात भी रखना चाहता हूँ सामने, कुछ सवाल भी करना चाहता हूँ। वो प्यार की ही सवाल है मेरे में। तो मेरा ऐसा कोई नहीं था कि ये करना है वो करना है, मैं तो कर दिया सर। मैं अनजाने में मेरी पहली फिल्म बना दिया, लेकिन वो मेरा 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 मुद्दा था, जो मुझे पता चला कि ये मुद्दा बहुत लोगों का है, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया। मैं फैंड्री में वही बात कहा तो फैंड्री में इतने लोगों ने कहा कि ये मेरी बात है। मैं अमेरिका में फैंड्री दिखाया तो वहाँ के एक जो ब्लैक लॉयर है, तो उसने कहा कि फैंड्री का जबे मैं हूँ। तो मुझे पता चला कि ये सीमाएं तोड़ के बहुत लोगों को अपनी कहानी लगती है, और मैं उसका कारण बन रहा हूँ, निमित्त मात्र बन रहा हूँ कि मैं ये कहानी कह रहा हूँ। तो सर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और मैं ये समस्याएं उठाते रहूंगा और ये जो सवाल पूछता रहूंगा, और इससे कुछ बेहतर होता है तो बहुत शुक्रगुजार रहूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, और देख के मुझे बताइएगा कैसी लगती है आपको फिल्म। बिल्कुल, थैंक यू सो मच नागराज, थैंक यू। Tom Hanks said, everybody has something that chews them up. And for me, that thing was always loneliness. The cinema has the power to make you not feel lonely, even when you are. So listen to his advice and watch good cinema. We will see you next week with more reviews and interviews. Until then, goodbye and thank you for watching.